Professor Anwar Pasha, how does the RJD feel about Rahul Gandhi, who spoke about tearing up an ordinance because he thought that convicted leaders were being protected, and everybody knows he was referring to Lalu Prasad Yadav. Today, when he campaigns along with Tejashwi Yadav, has he forgotten about all that, or has the RJD actually said, okay, fine, we forgive you? Swati, for the record, he never taught the ordinance that... No, I said he felt the need. Swati ji, this is आपका record आप ठीक कीजिए. All right, one by one. Mr. For Pasha. the record, Congress oppose Aam Aadmi Party for running Okay, for government in jail. Mr. Pasha. For the record, Mr. Pasha. Sanjay Jha is trying to correct you because you are giving misinformation about the tearing of the paper by Rahul Gandhi ji. It was not that case. Misinformation? We all know. Misinformation We all know. regarding what? Why your leader Shahzad Poonawalla, I consider him your leader, your spokesperson, your leader. This is My you spokesperson. belong from the same family. Totally unacceptable. My spokesperson. Yeah, why unacceptable? Why? What is the role of media today? What is the role of media today? The entire media is a good media. Lalu Prasad Yadav's conviction happened or not? That's all I'm telling you. Lalu Prasad Yadav's conviction Shut up. happened or I not? didn't interrupt you. Listen me. Excuse me? I have Excuse me? listened your sermon. You cannot I say have shut up listened to your anybody sermon. on this panel. Be silent. Listen me. No. If I ask question, No. you get the answer. First You'll get learn the how answer. to behave and The learn way how you to behave, speak. You'll get. Did the conviction happen or not? Did the conviction happen or not? Did Prime Rahul Gandhi not Minister speak about tearing is up the so ordinance? Obsessed of power. Did he not say that an ordinance that is going to protect convicted leaders should be torn up in his view? And he repeated that. He said it twice during the press conference. That's why he brought this bill. Your Prime Minister doesn't want to lose the power. Is he not your Prime Minister? Do you not live in India? Are you not an Indian citizen? He has brought such Are a you bill not an Indian citizen? to Do you not live in silence India? To silence the Is he opposition. not your Prime Minister? To What is put the going on out to here, silence the opposition. You have to respond to questions. If you're not willing to take the questions, just say so. He doesn't consider the citizens of Just India. say so. He is a Just leader say of so that only you do not Hindus. want to respond to questions. He claims to be the leader Instead of Hindus. pointing He fingers at doesn't everyone, consider the citizens of instead of India pointing fingers at everyone, just respond to the as the questions. citizen of the country. And I asked you a very That's decent why question. I said, how does the RJD feel about a man who spoke about tearing the ordinance and said convicted leaders are going to be protected? It was a decent question. How do you feel about Rahul Gandhi? Please now. And you want me to consider him my Prime Minister? He considers Muslim as Dushman. You live in a free country, Mr. Pasha. But unfortunately, the country is not run on your whims and fancies. There's something called as democracy, and elections take place in this country. I know our other guests want to come in. This Vivek Charachor Srivastava. party is saying that we won't consider Modi as Prime Minister. Whom will you consider as Prime Minister? Shahbaz Sharif? नहीं शहबाज शरीफ है क्या आपका प्रधानमंत्री? Vivek Srivastava. The citizen of the country, why should I accept him as my Prime Minister? This man has completely lost his Mr. Pasha. bearings. This Mr. man Pasha. is defending a convicted Charachor, abusing the anchor, Vivek abusing the Srivastava. Prime Minister, abusing the people of India. Vivek Srivastava. And we are listening to his rubbish. Vivek Srivastava. I'll start now. See, the first thing is that the intentions of the government are malified and not correct. हमने देखा राहुल गांधी को किस तरीके से यू हैड अ कॉन्स्पिरेसी, उनकी आपने जो पोजीशन थी एज अ मेंबर पार्लियामेंट छीनी, कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा, इट वाज रेस्टोर्ड, एक इमरजेंसी की तरह इस सरकार ने उन्हें घर से निकाला, बोला अब आप सांसद नहीं है, छोड़िए भागिए। यहाँ बीजेपी के इतने लोग हैं जो शायद फिर से इलेक्ट भी नहीं हुए और काफी समय तक अपने अपने अकोमोडेशंस में रहे। प्रियंका गांधी को कोविड के बीच में घर से निकाला गया, शी हैड टू लिव इन अ प्राइवेट फ्लैट, जबकि उनका एक सिक्योरिटी थ्रेट है। So the intentions of the government are not correct. Okay. गवर्नर्स के थ्रू ये बिल लाना चाहते हैं कि गवर्नर्स के थ्रू अगर उनका रिकमेंडेशन हो तो सरकारों को हटाओ, 356 को पीछे से लाना चाहते हैं। So this is basically they are what they are trying to do is Okay. that somehow do something that whenever you want at your whims and fancies. Now, Vivek Srivastava, there are two things. देखिए सर, दो चीजें हैं। एक तो आपने कोर्ट पर भरोसा जताया, आपने कहा कि कोर्ट के जरिए न्याय राहुल गांधी को मिला, तो इस मामले में भी जो 30 दिन तक जेल में रखेंगे वो कोर्ट का ही फैसला होगा। अगर रिमांड बढ़ाती है कोर्ट, अगर बेल नहीं देती है कोर्ट, तो वो कोर्ट का फैसला होगा। दूसरी बात केजरीवाल जी 160 दिन तक चीफ मिनिस्टर रहे, बाहर आने के बाद उनको अचानक मोरालिटी याद आई, इन्होंने कहा नहीं मैं नहीं बैठूंगा सीएम की कुर्सी पर, मैं बिल्कुल नहीं बैठूंगा। फिर जनता ने फैसला ले लिया सर। नहीं देखिए, अब you are mixing up a lot of issues. You are mixing up an electoral loss of Aam Aadmi Party in Delhi with Kejriwal being in jail.
That is not the only reason. There are many other reasons. Why? Why do you think that's not a reason? So many others. तो आप वो मत करिए. नहीं तो उधर क्या रीजन था? क्यों हारे फिर इलेक्शन? No, you talked of the court. See, इधर सर काम नहीं किया, या तो काम नहीं किया, गवर्नेंस खराब रहा, या तो लोगों को लगा कि देखिए ये तो एलिगेशन लगा है, सीएम जो है जेल जा चुके हैं, इसीलिए वोट नहीं देंगे. In politics, you win and lose, you come back again. Vajpayee was there, Vajpayee lost, BJP came back again. Today Modi is there, he is going to go. India Alliance will come back again. तो वो तो मुझे भी पता है, इसमें नया क्या बता रहे हैं आप? नया मैं आपको बता रहा हूं ना, जो आप कह रही हैं कि आपने तो आम आदमी पार्टी को राइट ऑफ ही कर दिया. कहां मैंने राइट ऑफ कर दिया? अगर चुनाव कोई हार रहा है और ये बोलना कि चुनाव वो हार रहा है, उसमें राइट ऑफ करना क्या हुआ? हैव दे नॉट लॉस्ट द इलेक्शन? और आपने कोर्ट की बात करी, कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के जितने भी केसेस सुने हैं, हाँ. उनके अंदर एक ऑब्जर्वेशन करी है. उसने कहा है कि कोर्ट ने कि इलेक्शन कमीशन मेरे दायरे, मेरे ब्रीफ के बाहर है, उसकी फंक्शनिंग में मैं इंटरफेयर नहीं कर सकता. अगर उसको लग रहा है कि एसआईआर होना चाहिए, तो कोर्ट इज नॉट ऑथोराइज टू इंटरफेयर एंड से नहीं होगा. इट हैज नॉट. उसका इंटरप्रिटेशन आप लोग क्या देते हैं? अरे कहां आप जा रहे हैं? मैं आपसे क्या सवाल पूछ रही हूं, आप क्या बोल रहे हैं? हाँ, मेरा ये मानना है, आज सत्येंद्र जैन बाहर हैं, कृपा करके उनका केस एनालाइज करिए. हाँ. मनीष सिसोदिया आज बाहर हैं. हाँ. अरविंद केजरीवाल भी एक तरीके से बाहर है. ठीक है, उनका केस चल रहा है. उनको बाहर भी अगर भेजा तो कोर्ट अरे ने भेजा, clean chit नहीं और मिला, जेल में रखा बाहर था है, तब भी बेल कोर्ट पे. ने रखा था. लेकिन लेकिन किसी को क्लीन चिट कोर्ट ने नहीं दिया है. मैडम, कोर्ट उन्हीं के आधार पे एक्ट करता है जो आपकी पुलिस, जो आपकी सीबीआई, What? जो आपके. Are you serious? You're saying court acts on basis of police? No, absolutely. The charge sheet जो Have you lost your mind? This is all comments by him. He is questioning independence of the judiciary, integrity of the judiciary. Now, Vivek, let me unpack this 20-30 seconds. You have been speaking for too long, but not making any sense. 20-30 seconds. First of all, sir, that we'll leave to the judgment of the people. JNU से आगे भेज नहीं रहे आपको. सुन लीजिए. ऐसे सुन लीजिए. विवेक जी, आप सुन लीजिए ना. विवेक से काम लीजिए. विवेक ही मत बनिए. See, first of all, he has done 20-30 seconds of Rahul Vandana. Rahul has said that Vijayan should go to jail with the same ED and CBI. Anyway, forget it. Then secondly, Rahul, आप मुझे एक बात बता दीजिए, ये हेमंत सोरेन करेक्ट थे जिन्होंने रिजाइन किया, या केजरीवाल करेक्ट थे जिन्होंने 150 दिन तक वहां पे बैठे रहे? दोनों केस डिफरेंट है. दोनों केस कैसे डिफरेंट है? सिटिंग चीफ मिनिस्टर को, सिटिंग चीफ मिनिस्टर, दोनों सिटिंग चीफ मिनिस्टर, दोनों के खिलाफ चार्जेस एक जैसे. एक ने तय किया कि मैं रिजाइन करके जेल जाऊंगा, एक ने रिजाइन नहीं किया, अंदर से सरकार 160 दिन तक चलाई. But there's one more issue. There's one more issue when you talk about tolerance to outlaws. Intolerance तो दिख नहीं रहा करप्शन के लिए, but tolerance to outlaws दिख रहा है. I want to bring in Dr. Ranganathan and then Sanjay Jha can also come in. Dr. Ranganathan, this is about the statement that Saida Hamid gave. ये borderless है. Everybody can live anywhere that they want to. This government has Yeah, so according to the Global Muslim Brotherhood,